So, good evening, YouTube. Here, sorry. Let's see, joins. Who's gonna join first? So, anyways, we're going to learn some new words, and so, good evening, Bhanu sir. How are you? Good evening, Simi ma'am. Good evening, Divyanshi ma'am. Hope you all people are good at your places. I'm good, thank you, ma'am. So we'll start our session in some time. I'm an ecstasy, sir. What about you? Sounds good. I'm good, thank you. Quite happy with life. Kabira, ma'am, good evening. I'm good, thank you. And how are you? So, I'm also good, thank you. Good evening, Mohit, sir. I'm good, thank you. And how are you? Just sounds good. Ranjana, ma'am, good evening. Priya, ma'am, good evening. That sounds great. That sounds really great. Keep boosting her morale. Sounds good, Mohit sir. Ranjana ma'am, I'm good, thank you. And how are you? That sounds good. So I think it's high time to start today's session. Sanidhi sir, good evening. I'm good, thank you. And how are you? Please let me know in the comment box. I should start today's session first of all, है ना? So आज का सेशन शुरू कर लेते हैं हम लोग. And आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द थंबनेल, और उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि द वर्ड जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इट्स मे बी लाइक if you ask me, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा शब्द नहीं है. इट्स वेरी सिंपल वर्ड एंड इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ वेरी कॉमनली एक्चुअली. So thanks, Mohit sir. Okay, good evening, Sudhir sir. Well, the word is tempt. इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. And I hope you all people must be knowing about it. It's a verb, ठीक है. और ये verb है, इसकी 3 forms होंगी. वो tempt, tempted and tempted होंगी. And इसको यूज करने के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका मीनिंग अगर आप हिंदी में देखेंगे, सो इट मीन्स किसी को लुभाना, आकर्षित करना या फिर ललचाना. फाइन. So in this situation you can use this word tempt. Let me really tell you, because आज का सेशन है इसमें मैं इसी से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ. तो जो टेम्प्ट एक्शन है, जब आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, एज एन एक्शन, तो मैंने कहा इसका मतलब ललचाना, ठीक है, इसका मतलब लुभाना, इसका मतलब आकर्षित करना. फाइन. सो यहाँ पे टेम्प्ट वर्ड यूज कर रहे हैं. सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सो आई होप यू गो अहेड. अगर आपसे पूछता कि आपको एक सेंटेंस बनाना है कि आपको क्या चीज़ लुभाती है, क्या चीज़ आपको आकर्षित करती है, एंड आप सबको यूज़ करना है, कौन सा वर्ड है, टेम्प्ट वर्ड को यूज़ करना है. सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपको क्या चीज़ लुभाती है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज. चॉकलेट्स टेम्प्ट्स मी. सिमी मैम, आपका सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, उसको सही करना है बस. Cheese sandwiches, cheese sandwich does tempt me a lot. Banu sir, your sentence is right. अच्छा, मैं अभी भी बता नहीं रहा हूँ कि क्या गलती है, आपको खुद को चेक भी करना है, because we have been practicing for a while now. So what tempts you? Priya ma'am has written this, and your question is
एब्सोल्युटली राइट. सो व्हाट टेम्प्ट्स यू, टेम्प्ट की स्पेलिंग का ध्यान रखना है बस. योर क्वेश्चन इज राइट. द ओनली थिंग जिसको आपको सही करना है दैट इज टेम्प्ट की स्पेलिंग. शूज टेम्प्ट मी. यस कबीरा मैम, यू राइट. योर सेंटेंस इज राइट. गार्डन्स टेम्प्ट्स मी. दिव्यांशु मैम नो, आप में का भी सेंटेंस थोड़ा सा गलत है. ठीक है. चॉकलेट्स टेम्प्ट मी. नाउ इट्स राइट सिमी मैम. गुड इवनिंग यादव सर. नाउ दिस आइसक्रीम टेम्प्ट टू मी. देखो आपने दो गलतियां की रंजना मैम. द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप आइसक्रीम लिख रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड, तो टेम्प्ट में क्या होना चाहिए? पहली चीज टेम्प्ट के बाद दूसरी चीज है टू नहीं लगेगा. स्पाइसी फूड्स tempt me, bite tempts me. Let me tell you one more thing. Tempt word को आप जब कोई चीज़ बेसिकली आप किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ आपको आकर्षित करती है, लुभाती है, तो कई बार टेम्प्ट का एक यूज़ करते हैं कि इवन कभी कभी इसको थोड़ा सा नेगेटिवली यूज़ किया जाता है. पॉजिटिवली भी ठीक है, बट इसका एक नेगेटिव सेंस भी होता है. जैसे जिसका जो रिजल्ट है वो मे बी आई थिंक नॉट इन वेरी पॉजिटिव, और थोड़ा सेल्फिश रीजन हो सकता है. ठीक है. सो चॉकलेट टेम्प्ट्स मी. स्वीट्स टेम्प्ट मी. Chilled sugarcane juice tempts almost everyone in the summer. I do agree with you. It does. Junk foods tempt me. अच्छा, एक चीज और बताता हूँ. आप जब इसको यूज करें तो एक और इसका ग्रामेटिकल पार्ट है जिसको आप मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ. जो इस वर्ब को यूज करेंगे आप, सो इसको दो तरीके से यूज करते हैं. टेम्प्ट समबडी इनटू डूइंग समथिंग. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. टेम्प्ट समबडी इनटू डूइंग समथिंग. अब इसको समझिएगा कि क्या मतलब है इसका. जैसे माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. व्हाट टेम्प्ट्स यू, व्हाट टेम्प्ट्स यू इनटू बाइंग लॉट ऑफ ड्रेसेस. क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं. तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप जो बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं? ठीक है. तो कौन सी ऐसी चीज जिसकी जिसकी वजह से आप बहुत सारे कपड़े खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं? इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. जैसे लेट मी अगेन टेल यू अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन्हें लगता है क्रेडिट कार्ड है, अभी तो पे करना नहीं है, पॉकेट में पैसे हैं नहीं, बट फिर भी चलो खरीद लेते हैं. सो इट रियली हैपेंस. सो it may be a reason. Cold coffee tempts me, tempts. Chocolate tempts me. He tempted me into doing a crime. बिल्कुल सही है. आपका सेंटेंस ठीक है. साड़ीज tempt me. But my question is very simple. What tempts you? What tempts you to buy, into buying sarees? इसका एक और तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, एक ये था. एक और टेम्प्ट को आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से. टेम्प्ट समबडी टू डू समथिंग. फाइन. सो इसका ये मतलब भी है. इसको आप दो तरीके से और यूज कर सकते हो. टेम्प्ट समबडी इनटू डूइंग समथिंग. इनटू क्योंकि प्रपोजिशन है इसलिए इसमें आईएनजी का फॉर्म यूज होगा जो भी एक्शन आप यूज करेंगे. और टू यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, कनेक्टिंग वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए टू के बाद आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. टेम्प्ट समबडी टू एक्शन. सो व्हाट टेम्प्ट्स यू, मैं दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. व्हाट टेम्प्ट्स यू इनटू, और एक्शन में आईएनजी. ठीक है. या फिर व्हाट टेम्प्ट्स यू टू डू समथिंग. कोई भी एक्शन हो सकता था. जैसे व्हाट टेम्प्ट्स यू टू, जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था, बाय लॉट ऑफ ड्रेसेस. या व्हाट टेम्प्ट्स यू टू eat junk food. What tempts you to do हो जाएगा ना. What tempts you to do multitasking. Multitasks, या तो इसको आप अलग अलग यूज रखना. Multitasks या यूज होगा, या multitasking. Low prices tempt me to buy clothes. Yeah, it's one of the
वेरी प्रैक्टिकल रीजंस। आप उसे लो प्राइसेस बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेल्स, तो आप सेल्स की बात कर सकते हैं। तो जो अलग अलग सेल लगी होती है ना, तो डिस्काउंट पे वर्ड बोल सकते हो कि आप डिस्काउंट टेम्प्ट्स मी टू बाय न्यू क्लोथ्स, या discounts tempt me into buying new clothes. So I want to know the answer. It multitasks one. And what tempts you to do multitasking? My actually, what I should say, like I have never thought about it, that what tempts me to be very honest, Bhanu sir, to be very honest to your question. I must say that I have never felt it. First time I have realized that, and I have to give it a thought. I have to think that what tempts me to do, multitasks. So maybe one thing, because most of the time in my posts I always write one thing, one life. So I think I've got a one life, and I want to make the most of it. So discount tempts me into buying dresses. So that's good. सो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, टेम्प्ट। इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, टेम्प्ट समबडी इनटू बाइंग समथिंग, या टू डू इनटू डूइंग एनीथिंग। तो कोई भी काम उसमें आप कर सकते हो। सिमी मैम इज रिटन न्यू डिजाइंस टेम्प्ट मी इनटू बाइंग न्यू क्लोथ्स। True, true, true. Your question is your sorry. Your reply is very, very practical. One of the reasons, and new designs tempt me to buy more clothes. One more things, one more thing that the Vyanshi ma'am has written. What she tempts me to to do her homework. She tempts me. Yeah, you can write this way. Bilkul. Now the second one is tempted. The word tempted. Fine. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, आई मस्ट टेल यू दिस। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज थर्ड फॉर्म, लेट मी रियली टेल यू, दिस इज थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का मतलब अगर आप मेरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कंडीशंस। इंग्लिश में अगर मैं कहूँगा तो वो एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपके सामने मान लो कि कोई भी ऑफर रखा गया, और अगर आप उस ऑफर से आकर्षित हो चुके हैं, सो कहने का मतलब है आपका जो सेंटेंस होगा वो है आई एम tempted. So this is very simple. Fine. Sounds easy, and it is really आप बिल्कुल बोल सकते हैं। सो आई एम टेम्पटेड। फाइन। जैसे किसने कहा कि यार वीकेंड पे क्या कर रहे हो, आई सेड नथिंग मच। सो हमने कहा चलो घर पे बैठते हैं एंड लेट्स हैव good dinner and something like this. So yeah, I'm tempted. So I'm interested, एक अलग चीज़, और आप उस चीज़ में उस चीज़ के प्रति बड़े लुभावित हो गए हैं, तो आप उस सेंस में भी कह सकते हैं कि आई एम tempted. But sometimes people use in other sense also, like I'm tempted but I can't. So आप इस जगह पे यूज कर सकते हैं, लालच में तो है, बस जरूरी तो है नहीं कि आप इस काम को करेंगे। You can say that way. So I'm tempted. So is it similar to I am down? I'm down. Down means what? In which sense you want to say that I'm down? Because I'm tempted to play badminton with you. Is this right? Yes, this is right. I'm tempted to. आप दो तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज आई एम टेम्पटेड टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो आई एम टेम्पटेड। इसको मैं
और क्लियर कर देता हूँ, आई एम टेम्प्टेड बाय, ठीक है? और उसका मतलब समझ जाओ, दिस इज अ पैसिव वॉइस, ये लाइफ का पैसिव है, ठीक है? सो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, बट देयर इट इज नॉट अ कंडीशन। आई एम टेम्प्टेड बाय, और आप उन चीज़ों के बारे में बता दें जिन चीज़ों से आप आकर्षित हो जाते हैं। देखो क्या चीज़ आकर्षित करती है, वो पहले वाले ग्रुप में हम लोगों ने बात की थी जब हम टेम्प्ट एक्शन को यूज कर रहे थे। नाउ यू आर टेलिंग अबाउट, आप अपने पैसिव वॉइस की बात करें, बिकॉज कौन सी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है? कपड़े करते हैं, ठीक है? तो आपने उनके लिए तो बना दिया, ठीक है, कि क्लोथ्स टेम्प्ट मी, चॉकलेट्स टेम्प्ट मी, मनी टेम्प्ट्स मी, क्लियर? बट आई एम टेम्प्टेड बाय, अब आपको उन चीज़ों के नाम लगाने हैं जिन चीज़ों से आप आकर्षित होते हैं। एंड आई एम टेम्प्टेड बाय, ये सेंटेंस भी सही है, और आप एम को हटा के गेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? आई एम को हटा के एम हटा दो, गेट लगा के भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आई गेट टेम्प्टेड बाय। सो both things, both sentences are right and both have the same meanings. So I am tempted by, or I get tempted by, clear? So I'm tempted by cotton kurtis. Okay, I don't want to get tempted by matar paneer, but sometimes I can't help it. I'm tempted by a long drive. I do get tempted by money. I get tempted by flowers. Okay. So I'm tempted by rain. मतलब बारिश का आपको टेम्प्ट करके कोई व्यक्ति बोल कुछ भी काम करवा सकते हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे यू नो आपसे कोई कह सकता है कि बारिश हो रही है, चलो, तो हम बारिश में आपको घुमा के लाएंगे, ठीक है? समटाइम पीपल से लाइक, बच्चों को पेरेंट्स यूजुअली, इन सो मेनी फैमिलीज इट हैपेंस दैट कि आपको चॉकलेट मिलेगी तो होमवर्क कर लो। सो पेरेंट्स टेम्प्ट देयर किड्स इनटू डूइंग होमवर्क, you know so I get tempted by cheese garlic pasta. So I get tempted, I'm tempted by flowers, I'm tempted by new bags. Okay, so I second you, Mohit sir. Someday I think I will have a session about some other things. So I'm tempted by nail polish. Okay, I'm tempted by the notification of live sessions. That's great. So why did you miss my last session then? In the last session, there were very, less, students were there. I think Divyanshi ma'am was not there, Bhanu sir was not there, Ranjana ma'am was not there, I think. So I'm tempted by flowers. Okay, I get tempted, I am tempted by artificial jewelry. I'm tempted by dal bati. So you can write this way, that's fine. The next one, it's tempting. Clear? Tempt हो गया, tempted हो गया, am tempted हो गया, get tempted हो गया. Now it's tempting. TEMPTING. इंग्लिश में इसको आप बात करोगे तो एडजेक्टिव, और मेरे शब्दों में बात करोगे तो क्वालिटीज. मीन्स टेम्प्ट में अगर आप ING लगा दे. Okay, I watched it the very next day. Okay, thank you. So the tempting word, fine, it's a quality word. अगर आप tempt में ING लगा देंगे तो आप किसी चीज की क्वालिटी बना देंगे, वो चीज जो कि टेम्प्ट कर सकती है. देखो, टेम्प्टेड एंड टेम्प्टिंग में यही डिफरेंस है. अगर आपने अपने लिए बोल दिया आई एम टेम्प्टिंग, सो बहुत ही, मे बी आई थिंक कई लोग तो ये बोल सकते हैं कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं. और दूसरी बात है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति को अपने अंदर बहुत, कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से जिन्हें बहुत अधिक ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम टेम्प्टिंग. मेरे साथ में लोग जो आते हैं तो पीपल के नॉट
ignore me, so they, they can say like this way. Otherwise tempting हम ऑफर्स के लिए बोल सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप टेम्पटिंग वर्ड यूज कर सकते हो. Usually, sorry sir, actually my exams are around the corner and I switched off my phone and I forgot to join, but I watched it. Okay, yes, I know ice cream is tempting, but I have to control myself from eating it. Yes, so you can say that. Yeah, so you know, especially food के बारे में बोल सकते हो कि it's tempting, आप बोल सकते हैं when you say offers के बारे में. So you can say that way, that if I'm running a showroom and anything, and I just say that कि tempting offers are running. So आप मान के चलिए कि बहुत ही लुभावने ऑफर चल रहे हैं. So tempting offers आप बोल सकते हैं, as I said, and I said it is tempting to do something, आप ये भी कह सकते हो. It is tempting to do something, मतलब अपने आप में वो जो काम करने वाला है, ठीक है, किस काम को करने में अगर आपको बड़ा आकर्षण मिलता है, तो यू कैन से दैट इट्स टेम्पटिंग टू यू नो वर्क विद सम एमिनेंट पीपल, बहुत ही प्रभावशाली लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ काम करना, इट्स टेम्पटिंग. So Golgappas are tempting. The cafe menu seems to be tempting. Yeah, बिल्कुल आप using very good, and but sometimes वो शायद आपने सुना है कभी, मैंने आपको शायद अभी 2 दिन पहले एक शॉर्ट्स शेयर किया था. खोदा पहाड़ निकली चूहिया. So craft work is tempting, right? Yeah. So क्या था वो, खोदा पहाड़ निकली चुहिया. So who is telling me this in English? Much कुछ ऐसे ही था. Much dash dash dash. So reading craft words. So Prabhu says art is tempting. Okay, much ado about nothing. Yes, Simon, you're right. Absolutely. So much ado about nothing. तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया. So it does happen so many times that we go to a restaurant and you know जब order करते हैं, menu seems to be tempting, and but when we order and when we eat, sometimes we feel that we cook better than that, and usually it does happen nowadays. बहुत सारे, like especially here in Jaipur, I've experienced it recently on my sister's birthday on 1st of April. She threw a dinner, she threw a party, and we all people went to a very, I would say, very good restaurant, and name was also good. I wish I could mention here right now. We went there, we ordered, and we ordered because the dish was the name really tempted me, that cheese ball, that was a cheese, forgetting this, is cheese malai, kofte, the cheese malai kofte it was, and in spinach and mint gravy. So there was no cheese in the balls and in that kofta actually. So there was no cheese. I was not able to find that, and there was no mint in the gravy. Nowadays, because I cook, so I do understand that. So I didn't find it. So here the example is true. Cheese ball makmali kofta. Yeah, Sanidhi sir, you're right. Thank you. So it is there. So it happens. So I would say that much ado about nothing, and rates are quite so very high. So it does happen.
Anyways, let's go ahead with the next word. Waiting for your okay. Creative work is tempting. Creative work is tempting. So that's fine. And the last word I must share with you, and this is temptingly. Fine. टेम्प्ट हो गया, टेम्प्टेड हो गया, टेम्पटिंग हो जाएगा, अब टेम्पटिंगली। इट्स एन एडवर्ब, और आई थिंक अगर आप एडवर्ब की जब डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एडवर्ब क्या करता है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। ठीक है। सो डिफिकल्ट रोड्स मे नॉट सीम टेम्पटिंग, बट it often leads to beautiful destination. Beautiful quotation. You must have got it from some, you know, traveling company, I guess. Greenery is tempting. Okay, so आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। टेम्पटिंग मतलब ये चीज़ है कि आपको टेम्प्ट करता है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू रेजिस्ट योर सेल्फ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आपकी फेवरेट चीज़ रख दी जाए, सो मतलब आप नाम सुनते ही वट मेक्स योर माउथ वाटर, द थिंग्स आर लाइक टेम्पटिंग। एंड समटाइम्स आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए कभी कभी गलत तरीके भी अपना सकते हैं। दैट इज व्हाट टेम्पटिंग। सो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना। सो इट हैपेंस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पटिंगली। ठीक है, तो टेम्पटिंगली के लिए बोलना आपको मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, तो यू कैन से दैट इफ समथिंग इज क्वाइट इजी। ठीक है, हम लोग बोलते हुए भी आ रहे हैं। अगर आप मान लो इजी वर्ड के आगे टेम्पटिंगली लगा लो, मतलब फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग दैट इट्स टेम्पटिंगली इजी, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने सेंटेंस को और खूबसूरत बना लेते हो। तो इट्स टेम्पटिंगली इजी मतलब बहुत ज़्यादा। अब इसको वो मत लेके जाना कि लुभावने रूप से आकर्षित करने के लिए नहीं, तो बस आई एम जस्ट सेइंग दिस कि आपको इन शब्दों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सो इट्स टेम्पटिंगली इजी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट जो लोग एग्जाम्स में चीट ऑन द टेस्ट्स, तो जो भी टेस्ट होते हैं उसमें वो चीट करते हैं। फाइन, और उन्हें क्या लगता है कि यार बहुत आसान काम है, एंड दैट इज व्हाट दे डोंट स्टडी अराउंड द ईयर। सो उन्हें, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो ये मान के चलते हैं कि इट्स स्टार्टिंगली इजी टू चीट ऑन द टेस्ट्स। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है काम। सो देयर दे कैन यूज टेम्पटिंगली इजी। फाइन। सो कोई भी काम जो टेम्पटिंग रूप से किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पटिंगली। सो लुभावने तरीके से, जो तरीका होगा वो बड़ा आसान सा होगा। आसान सा मतलब लुभावना होगा, आकर्षित करने वाला। सो ग्रीनरी इज टेम्पटिंगली ब्यूटिफुल। सो ग्रीनरी इज टेम्पटिंगली beautiful to to what? It is temptingly easy to be kind to everyone. A good thought, very good thought. It should be decorated temptingly. Yes, it should be temptingly decorated. It should be। इसमें सुधीर सर आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं दैट इज बी। सो जो टेम्पटिंगली वर्ड है वो डेकोरेटेड से पहले यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी टेम्पटिंगली डेकोरेटेड, बिकॉज यहाँ पे जो डेकोरेटेड वर्ड है दैट इज नॉट द वर्ब हियर। इट इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। इसमें वर्ब बी है। और जैसे आप इट इज यूज करें तो आई होप आप सबको पता है ना, इज भी इट्स अ वर्ब। बी की बी को हम इज में मान के चलते हैं। सो द सेंटेंस शुड बी इट शुड बी टेम्पटिंगली डेकोरेटेड। जैसे अगर मान लो कुछ आप किसी आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है, आपने बना भी लिया, एंड अब उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट को आप दिखाएं, तो इट शुड मतलब योर प्रोजेक्ट शुड बी क्या होना चाहिए? टेम्पटिंगली डिस्प्लेड और टेम्पटिंगली शोन। फाइन, सो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
Well, guys, that's all for today. Nice being with you. I hope आप सबको ये बहुत आसान लग रहा होगा, but let me really tell you, it is not as easy as it seems. So you have to practice. So you must ये जो वर्ड्स हैं आप इनको एक्चुअली कॉपी में अलग से लिखिएगा, यहीं पे लिख के मत छोड़ दीजिएगा प्लीज़। एंड कुछ टाइम के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करके अपना जो यू नो जो कंप्यूटर यहाँ पर है उसको ऑन करिएगा एंड ट्राई टू मेक योर ओन original sentences, because a copy is a copy, and nothing can beat the original things. So जो original है that stays longer. So I think you guys must realize this, that कि हम लोग ओरिजिनल पे ज़्यादा यकीन करें. I think your food should be temptingly served. Yes, should be temptingly garnished. Served भी ठीक है और garnished भी यूज़ कर सकते हैं. So thank you so much for today. See you on Wednesday. See you on Wednesday. Let me tell you, अभी आप में से जो लोग बच गए हैं उनको मैं बता दूं, अब हम लोग जो सेशन कर रहे हैं, I forgot, I should have told in the beginning. We have 3 days. I've chosen this, not every day session now. So the days would be Monday, Wednesday, and Friday if nothing is urgent. So I would like to conduct sessions 3 days a week. So see you on Wednesday now, not tomorrow. सो कल का सेशन नहीं होगा. हाँ, जरूर चेक करते रहिएगा आप लोग में से. आई डोंट नो दैट यू चेक इट आउट और नॉट. शॉर्ट्स मैं लगातार अपडेट करता हूँ, 1 or 2 एटलीस्ट. देर आर सम वर्ड्स. आई थिंक आज का जो शॉर्ट्स था आप में से शायद, आई थिंक नोबडी हैज सीन, सिकनिंग वर्ड था जिसपे मैंने आज डिस्कशन किया था. इट वाज अ गुड थिंग, है ना. सो सो आई मस्ट से दैट कि अगर कल लाइव सेशन नहीं है तो आप या तो अपना कोई रिवीजन सेशन कर सकते हैं, अदरवाइज look for the shorts or maybe a video, a short video about vocabulary or maybe something else. So thank you so much. Good night.